Good morning everyone, this is me Shiban and you're watching the online lecture series of forms of gender inequality, and this is the third video of this particular series. Again, before starting the video, I must tell you that those who are watching the video of SEM 4, please like the video so that I could know the number. जो वीडियो देख रहे हैं SEM 4 के, वो लाइक करें वीडियो को ताकि मुझे पता चले कि वो कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख रहे हैं वीडियो को। और उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि जो वो स्टूडेंट्स जो SEM 4 के हैं उनके लिए मैं एक Q&A सीरीज़ लेके आने वाला हूँ सैटरडे को 11:30 बजे दोपहर में, सुबह में बल्कि, और उसमें मैं आपके सवाल का जवाब मैं अपने वीडियो के थ्रू दूंगा। तो आप अपने सवाल जो है जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है या कुछ सवाल उठ रहे हैं तो वो सवाल जो है उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दीजिए ताकि जो है मुझे ढूंढने में आसानी हो, एंड सो दैट आई कैन आंसर योर क्वेरीज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट सो दैट आई कैन क्लैरिफाई योर डाउट्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि सैटरडे को ही जो है जैसे ही वीडियो सेशन ख़त्म होता है और आपके क्वेश्चन आंसर ख़त्म होते हैं तो मैं एक जो है आपको अगेन एक इवैल्यूएशन करने वाला हूँ, एक थोड़ा सा असेसमेंट करूँगा जो मैंने पिछले 4 वीडियो में पढ़ा है। तो ये तीसरा वीडियो है इस पर्टिकुलर सीरीज़ का। पहले 2 वीडियो में मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन दिया था जेंडर फॉर्म्स ऑफ जेंडर का और बहुत सारी बातें बताई थी, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए। दूसरे में मैंने जो है 3 फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी बताया था, मोर्टेलिटी इनइक्वालिटी, नेटैलिटी इनइक्वालिटी एंड बेसिक फैसिलिटी इनइक्वालिटी। अब जो हम बात करने वाले हैं वो आज के इस वीडियो में 2 और टाइप के इनइक्वालिटी के बात करेंगे। So the fourth important point or the fourth form of special forms of gender inequality is special opportunity inequality. Before starting this video, the objectives of this video is that number 1, you have to understand, you will be able to understand what is special opportunity inequality by the end of this lecture and how it is so relevant in today's era, right? And the next point that you will be able to understand is that professional inequality, right? So let's start it. Now अगर आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत कॉमन सी बात है जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन it's not so common. It is there in your syllabus and you have to study it as seriously as you can, right? Now the fourth point, special opportunity inequality. As I've already discussed in the last video that the schooling for the girl child is very difficult in urban and semi-urban or rural areas. It is just next to impossible, and today that picture is though getting better, but yes, it's the part of the picture is more ugly, right? Now when the children are not getting into the school, then what about the question of getting them into the higher education? By children, I mean to say the girl child. It's very narrow कि जो बच्चे हायर एजुकेशन सिस्टम में पहुंच रहे हैं, बहुत ही नैरो है मामला. Yes, it is very narrow. Why I am saying that it is very narrow? Because the colleges and the higher institutions has very limited approach to the society. It is limited to the urban or semi-urban. But what about the rural people? Most of the population of India lives in gaon, in rural areas. And every college, the colleges are very distant from their native place. And if it is there, the quality of education is absolutely worse. Worse and absolute worse. Why I am saying that? Because the teachers are not there. And if the teachers are not there, who's going to teach them? Who is in the grave need? जो उनको पढ़ाया कौन? जो वाकई में उसके हकदार हैं, उनको ज़रूरत है उसकी. खैर, anyway, so special opportunity inequality यहीं से शुरू होती है जब आपको, if you are not able, then opportunity does not come to you. तो आप एबल ही तो नहीं बन पाए, काबिल जो कहते हैं नहीं बन पा रहे, यू नॉट एबल टू गेट दैट पर्टिकुलर थिंग, वो चीज़ों को आप पा ही नहीं पा रहे हो. नो अगर हम बात करें कि ये
के बल्कि कभी कभी ये थ्योरी को एक बड़ी ही अजीब तरह की बातों से लिपा पोता जाता है कि विमेन इसी तरह का काम कर सकती हैं और मेन इसी तरह का काम कर सकते हैं. विमेन आर केपेबल ऑफ दिस ओनली एंड मेन आर केपेबल ऑफ दिस ओनली. या फिर इस आइडिया के साथ कि विमेन्स कैपेसिटी इज डिफरेंट देन मेंस कैपेसिटी. नाउ इस पे अगर हम बात करें तो क्वीन विक्टोरिया, इस चीज़ के ऊपर जो बल्क आया वो क्वीन विक्टोरिया का वो मेमोir जब छपा था जिसका नाम था राइट्स ऑफ विमेन, जिसको वोल्स्टनक्राफ्ट ने भी जो है बहुत ही ज़्यादा वेटेज दिया. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ विमेन जो उनकी एक बुक आई थी विमेन राइट्स के ऊपर, उसमें भी. नाउ मामला ये है कि इवन इन द in the countries which is more equipped, in the country which is so called developed, the virus is reaching into them also. Because when Queen Victoria said in her sermon, then don't let men to strive into your province. It means that at that time also people were thinking in the way it is कि women's provinces and men's provinces are different. Province के माने होता है capacity, they are different. Province के माने होता है area, they are different. So what he is saying, he is saying that don't let the men to step into the women's province, or your province will be lost, or your province will be lost. तो बड़ा गहरी बात उन्होंने कह कर के गई हैं. तो अगेन मेरी बात जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि इट इज समथिंग विच स्टार्ट्स फ्रॉम प्रैक्टिस, देन गेट्स इनटू द ट्रेडिशन एंड देन इनटू द साइकोलॉजी एंड फाइनली इनटू द हेरिडिटी. सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स गेट इनटू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट. The fifth point is professional inequality. Yes, professional inequality. When I'm talking about professional inequality, in this I mean that the women is professionally educated, equally educated. The way I am educated, the way she is educated, the way she is. I mean, all the students, all the colleagues of a particular office, institute or school is equally educated, and that is the reason why they are there. But there comes professional inequality. मतलब हम बराबर हैं, मेरे साथ लोग वो बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर भी अगर कोई लेडीज है तो उसको inequality को फेस करना पड़ता है. What does it mean? In the places of work, women are, handicapped by men, if I'm not wrong. And the grieving point, the more grey point you can say, or the more the dangerous thing is that they accept it and they feel it is a part of system. It is a part of system. Now, for example, if you take the example of Japan, education is given to all women, all girls, all everyone, right? To the higher level. Higher levels तक सबको equal opportunity है. जापान छोटी country तो access is very easy, है ना? Access is very easy. But when it comes to employment, women are not been employed. India में भी बहुत सारे offices में women are not been employed. Especially when women raise their voice in the name of Me Too movement, what happened? क्या हुआ? The offices, the schools, the colleges started not giving job to women. Now, क्योंकि ना रहेगी ना मीटू जैसी कोई चीज हो सकती है और ना बदनामी होगी. This is their theory. Colleges, they declined to give holidays. Sorry, not colleges, but rather the private institutions, private offices, they declined to give holidays to the pregnant women or lactating mothers. क्यों? And
if they went for the holiday, it happens that they are going for a holiday, they are going for a unpaid holiday. Though the government says differently on this issue, but nobody accepts this thing. इस चीज को कोई accept नहीं करता है. And there is no check and balances whether the implementation of the government policies have been properly implemented or not. There is not a proper check. Now we are in 2020. We have to move forward. We have to teach a student that this is the evil, the most dangerous evil of the society that can ever be happening. And I must tell you, this should be taken off, or the society will going to face greatly. So this is for today, and yes, once again, I'm mentioning it that जो fourth semester के student है वीडियो को like करें ताकि मुझे पता चले कितने लोगों ने देखा. And of course वो students जो fourth semester के हैं उनके लिए मैं बता दूं कि सैटरडे को 11:30 बजे मैं एक Q&A सीरीज़ करने वाला हूँ. 11:30 बजे तक आपको वीडियो मिल जाना चाहिए, और अपने सवाल जो उस वीडियो से रिलेटेड है, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डालिए, so that we can answer your queries, right? So that we can answer your queries. So with this, thank you for watching the video. Stay happy, stay healthy, stay clean, and do wash your hand at least 2 times in 1 hour. Thank you for watching this video. Sayonara.